Hi guys and welcome back to my channel. So today's video is going to be a very detailed beginner's makeup look, and this is what I have come up with. It's a very simple look, but it is a full face of makeup, and even as a beginner you can do a full face of makeup. You just need to know how to apply your product correctly and that is precisely what I'm going to show you in this video. So if you want to achieve this look, which is very everyday, very casual, very natural, then keep on watching. Okay, so we're gonna start with a fully moisturized face, of course. Then we're gonna go ahead with a damp beauty blender, your favorite foundation, and a facial oil. So I think this is something that's very specific to dry skin or for people who like their base very dewy and like light. What I like to do is mix the two and apply the foundation on my face using dots and spreading them evenly, and this trick honestly works like magic for beginners because इससे आप control कर पाओगे how much product you're putting on your face and it's not going to look cakey at all. Also, it's very easy to then blend it with a beauty blender. All you have to do is press on the foundation lightly and then it'll start blending on its own. आपने dots डाल दिए हैं तो वो already evenly spread होगा and you don't have to worry about having patches in your foundation or putting too much. एंड ट्रस्ट मी, फाउंडेशन लगा के जब आप उसे ब्लेंड करते हो तो वो काफ़ी अच्छा दिखने लगता है एंड वो कवरेज पता लगने लगती है. तो यू डोंट हैव टू स्टार्ट विद अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट. नेवर फॉरगेट योर नेक बिकॉज वी डू नॉट वांट टू लुक लाइक फ्लोटिंग हेड्स. एंड देन जस्ट ब्यूटी ब्लेंडर को अपना टाइम लेके पेशेंस से आप ब्लेंड करते रहो. आई हैव फास्ट फॉरवर्डेड इट हियर बिकॉज it just took a long while. But it's really easy to do your base, honestly, and for beginners I would just like to suggest that first understand how your foundation works and honestly skip concealer. Then to set this base we're going to put loose powder, and again loose powder लगाने का भी सेम ट्रिक है. एक बड़ा ब्रश लीजिए एंड उसको भी जेंटली अपने स्किन पे पैक करिए. सो आप इवनली स्प्रेड करो एंड देन उसको पैक इन करो. उस पर भी हल्का सा प्रेशर डालो जैसे आपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ किया था, एंड देन यू कैन कीप ब्लेंडिंग इट. इट विल ब्लेंड इन ईजिली एंड इट विल नॉट look patchy or anything. So while I say that, I kind of have left a spot on my forehead, but it was late in the night and I just didn't see it. Okay, so मेरा trick है ये personal. I like to put some facial mist, some setting mist on my face, just so that my base gets like really melted in, like the powder gets melted into the foundation, and then I seal it with my beauty blender. And ये beauty blender हम बहुत यूज़ करने वाले हैं. Next आपको lip balm लगाना है because you still have time till you do your lipstick, so your lips will be moisturized. Okay, so next we move on to brows, and I like to start with a spoolie, and then all you have to do to get the right kind of brows is to follow जो आपका natural brow line है और जो आपका natural brow का shape है. So all you have to do is make these very tiny strokes in the direction of your eyebrows, and you'll see that I'm also using my fingers to control like the kind of pigment, और अगर कभी मैंने कुछ बाहर line के बना दिया, or if the brow looks too thick, you can always go ahead and do that. And I think that's the beauty of makeup because you can always control the things that you want. So don't be shy to use your fingers, or if you do mess up a little bit, you can always clean it up. And that's pretty much what I do. Now I'm going to do the same on the other one and finish it again with a spoolie. So you can measure your brow, like how much it should be, by just doing this, and you'll be good. Okay, so next we do eyeshadow. We start with a nude brown and हम excess product को obviously tap out करेंगे. Brush को पीछे से पकड़ेंगे so there's not a lot of pressure, and then we don't like overly apply the pigment. इसको आप बस अब circular motions पे अपने crease के ऊपर डालेंगे, and you'll keep using these circular motions and going back and forth till the time it becomes one with your skin. Like that's the kind of expression I think that comes to mind when I think of eyeshadow. The more you blend and the more nicely you blend, the nicer your eyeshadow is gonna look. Then I'm taking a dark brown and putting it at the outer end of my eyes, so the outer V. And this we are doing because I want to create some like really nice shadow and depth on my eyes. सो डार्क ब्राउन लिया और अब हम बाहर लगा रहे हैं, एंड सेम हम उसे ब्लेंड करें बहुत अच्छे से सो दैट ऐसा ना लगे कि हमने बस कलर लगा के छोड़ दिया और वो एक पैच सा बन जाए. वॉट एवर यू डू ऑन द राइट आई, रिपीट इट ऑन द लेफ्ट.
आई मीन ऑन आइदर आइज. सो अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने दोनों आउटर कॉर्नर्स पे लगाया है. अपना टाइम लिया है, लाइक अभी ये वीडियो एडिटेड है सो इट सीम्स क्विक बट आई हैव टेकन माई टाइम. I'm doing the same thing on the inner corners of my eyes too, because today I want a more like a very soft spotlight sort of look. And ये बहुत easy है, आपको बस colors को match करना है. Brown eye shadow एक ऐसा eye shadow है जो I think अब हर किसी के पास होता है. ओके सो अब इसको और अच्छे से ब्लेंड करने के लिए जिस कलर से हमने न्यूड ब्राउन से हमने स्टार्ट किया था, हम उसे दोबारा ब्राउन के डार्क ब्राउन के ऊपर ब्लेंड करेंगे ताकि वो सब कुछ सॉफ्ट हो जाए. फिर एक गोल्डन शेड लेंगे और उसे बीच में लगा देंगे. एंड आई वेंट विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूड ब्राउन, डार्क ब्राउन एंड गोल्डन बिकॉज आई थिंक ये कलर्स बहुत फ्लैटरिंग लगते हैं हर किसी स्किन टोन पर. ऑल्सो ये कलर्स ईजिली अवेलेबल होते हैं आप सबके पास. सो आई एम प्रीटी श्योर अगर आप बिगनर हैं तो यू आर नॉट गोना हैव अ लॉट ऑफ फैंसी प्रोडक्ट्स और आई शैडो पैलेट्स एंड यू माइट नॉट इवन वांट और नीड देम. सो आई थिंक दिस कलर कॉम्बिनेशन इज वन ऑफ द सेफेस्ट बेट. सो नाउ अब हम एक मीडियम ब्राउन लेंगे एंड हम अपना जो वाटर लाइन होता है जहाँ हम काजल लगाते हैं उसके नीचे करेंगे. एंड दिस इज़ टू कम्प्लीट द आई लुक सो दैट ऐसा ना लगे कि आपने ऊपर तो कलर लगाया बट नीचे को बिल्कुल ऐसे गंजा छोड़ दिया. सो दिस इज़ वाई वी डू इट. आई ऑल्सो एडेड थोड़ा सा डार्क ब्राउन जस्ट टू एड सम डेप्थ. एंड देन कम्स द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट विच इज़ योर विंग. सो मैं अपनी विंग सिर्फ अपना आउटर कॉर्नर पे बनाती हूँ एंड हल्का सा लिड पे लगाती हूँ एंड दैट इज़ ऑन सम डेज. टुडे आई डिसाइडेड टू गो विद दैट लुक. बट अगेन विंग का जो शेप होता है वो एक्चुअली आपके आई के शेप के हिसाब से होता है. तो मेरा काफ़ी क्लासिक एशियन मोनोलिड है, इसलिए मैं विंग अपनी थोड़ी पतली और छोटी रखती हूँ. बट इफ़ यू हैव लाइक almond eyes or if you have like bigger eyes in general, you can do like a full nice big wing or a very very thick wing. उसके बाद mascara is very important. It's gonna bring everything together in your look. It's going to make your lashes pop and it's gonna make you look much more awake and interested than you actually are. And do not forget the lower lashes, and I think instantly काफ़ी फ़र्क पड़ गया है. Then because it's a beginner's look, again हम contour नहीं करेंगे, हम bronze करेंगे. So we're just gonna add a little bit of warmth to our face because हमारा face अभी काफ़ी pale लग रहा है because there's a layer of foundation. So बिल्कुल इस तरह से upward motions में बड़े से brush के साथ हम लोग bronze करेंगे. And अगर आपको लग रहा है आपने थोड़ा ज़्यादा कर दिया है तो again same beauty blender लीजिए, no product, and then just dab it in the direction and in the area that you want. Same on the other side. Then I like to do my forehead because I have a big forehead, and I also like to do like my jawbone because I want to look slimmer from my face. And one thing that I definitely do is nose contouring, and this is totally optional. Like if you have a really nice, you know, sharp defined nose, you don't really have to do it. My nose sadly is a very blunt nose. It's not defined at all, much like my eyebrows. So I like to do some very nice subtle nose contouring, and that's how I just make a nose for myself. And then another trick, ये जो blush है, instead of applying it with a flat brush, I'm using a stippling brush or a kabuki brush actually. जो कि kabuki का मतलब ये होता है कि it's a flat top brush. I like to put some on my nose as well to give a very like I don't know, eager look, and I think अभी मैं बहुत interested हूँ उस look में. So next we do highlighter, and highlighter सिर्फ high points of your cheeks पे, high points of your face पे, not under your eyes, not all over your face. अब आप एक ब्रश लीजिए एंड वेरी लाइटली इसको भी हल्का हल्का सर्कुलर मोशंस में और बहुत कम प्रेशर के साथ आपको हाई पॉइंट पे लगाना है, जस्ट द वे आई एम डूइंग इन द वीडियो. एंड देन अपना ब्यूटी ब्लेंडर लीजिए और देन यू कैन जस्ट डैब इट. अगर आपको कभी लगता है कि आपने बहुत हाईलाइटर लगा लिया, ज़्यादा हो गया है, यू कैन ऑलवेज यूज़ दिस ट्रिक. आई डू दिस सो दैट सब कुछ ब्लेंडेड लगे, बट इट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट. Then wherever you feel like, you put on the highlighter, like I've put on my nose and my brow bones, and then apply lipstick just the way you like to apply lipstick. And bus, that's pretty much it. It's a very casual, simple look, but I think it would work really well. And if you follow these steps, you can do it too. So that was it for this tutorial. I hope you guys enjoyed it, and I really hope that you learned something from this video. You learned the techniques, and if you're a beginner and you really want to try your hand at makeup,
you have a lot of time right now. And if you do recreate this look or do something inspired by it, like a natural look or a no makeup look, then make sure that you send me pictures on my Instagram, and I will put the link to my Instagram account in my description box below. The name is Little Miss Gurung, which it is on YouTube as well, and I did this because this is where you can see the Instagram name. I'll put it on edit. And as always, you can find the link of all the products that I've used in the description box as well. So I really hope you enjoyed this video, you learned something. I hope this was entertaining enough to watch. I am shooting everything on my own, and yeah, I'm gonna, once the lockdown is over, I'm gonna give you much more professionally shot videos, so just please bear with that. And you know, I love you guys. I hope all of you are taking care, taking precautions, following government orders, and I'm gonna see you in the next one. Bye.